Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो सिर्फ शूट करने से पहले की तैयारी है। लेट्स गेट रेडी फॉर फिल्मिंग। एंड यहाँ पे बस मैंने झलक दिखाई है, बट जब हम वर्क कर रहे होते तो बहुत पहले प्लानिंग करनी होती है। एंड ये क्लिप्स में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ ये मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए क्लिप्स यूज़ करी हुई हैं। तो एंड में मैंने डिसाइड किया कि ये पूरा मतलब लुक अपलोड होना चाहिए बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट। तो यहाँ पे मैं एल्फ हेलो ग्लो से प्राइमिंग कर रही हूँ अपने फेस पे। तो मैं इस साइड पे ना जस्ट गोइंग इन विद मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन इन द शेड 02 creme ग्लो। दिस इज द लाइटर फाउंडेशन शेड, एंड बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, तो आई एम गोइंग इन विद लाइट फाउंडेशन। एल्फ हेलो ग्लो का रिव्यू ऑलरेडी जा चुका है चैनल पे, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लेना। एंड एक इसका एक और प्रोडक्ट है के ब्यूटी का एच डी मैट सेटिंग पाउडर, उसका भी रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे चला गया है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर लेना। एंड लिंक्स मैं सब्सक्राइब में दे दूँगी। एज यू कैन सी आई एम यूजिंग दैट के ब्यूटीज़ एच डी मैट सेटिंग पाउडर। अमेजिंग अमेजिंग पाउडर, बट आपको डिटेल में जानना है तो ऑब्वियसली चेकआउट कर लेना। शेमलेस प्लग ऑन माय ओन वीडियो। Then I had applied a blush on my face, a cream blush. I think I applied Band Baja blush from a child of Masaba, but मैं दिखाना भूल गई हूँ। In the shade, I don't remember, Bubblegum Baraat, right? Yeah. Then I went in with e.l.f's brow pencil. That's very good if you want these natural sort of eyebrows. Then I'm going in with Essence Lash Paradise Princess Mascara, one of the best ones. This is a non-waterproof one. So then I'm going in with Nika's pencils. This is the first product that I have tried from Nika, and oh my god, my mind was blown. I also have another lipstick, by the way, so this is not my first, but that lipstick is also really good. Makes me want to try more products from their range. I will definitely let me know in the comments if I should do. Then I'm going in with this Wet n Wild's clear mascara, just because वहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा I was feeling like you know blue lag gaya tha, so I just was clearing that out. This is really good if you want to set your brows in place, and it is super inexpensive. You will get it on Nykaa, I'm sure. मैंने तो लिया है and I've been using it and I've been still using it. I really like it. Then I am going in with a powder brush. This is NY Base powder brush. The shade details I totally don't remember. मैं links नीचे डाल दूंगी so that आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो you can. And it's a very beautiful pigmented blush, super affordable, so it will not burn a hole in your in a pocket product, it seems. I sometimes don't know how to speak, you guys. And then I'm going in with Wet n Wild's lip pencil in the shade Chestnut. This shade is such a flattering shade, goes in with all the lipsticks. Like, it's a very perfect brownie nude with tiniest hints of pink in it, and I absolutely love this color on almost all my lip glosses. So I go in with this and apply a lip gloss. I've been loving this combo from Fenty Beauty and this Wet n Wild one, and it looks the juiciest, most beautiful lips ever. And that is why I've been loving lip glosses, because this combo is to die for. Now, as you can see, doesn't this look superb? I love it. And then I'm going in with Pack Micro Finishing Fixing Spray. So this is a very beautiful, finely mist, fine mist that doesn't feel like you're under a fountain. And this is how my makeup look has turned out to be, and I absolutely like it. This is so simple, easy peasy, lemon squeezy. And I will see you guys in the next one. Till then, you guys take care, stay safe, bye bye.